कपन को, दिल के दर्पण को सफा कर, दूर कर अभिमान को। खाक हो गुरु के कदम की, तो प्रभु मिल जाएगा, तुझ परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदाए, 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 तुझ परम पद पावेगा, सोई परम पद। अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो सब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सब डिस्को डांस करते रहेंगे। हमारा जो कल्चर है वो बचाने में, उसका प्रचार करने में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। जब हर एक को बुलाते हैं, सुनाते हैं, प्रचार करते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, सब वहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी यानी आदत हो जाती है कि हमारा कल्चर कितना। बट थिंग्स दैट अपलिफ्ट, थिंग्स दैट really move human beings, very few young people are going towards that, and we have to rejuvenate the society. We have to make young people think about these things and make them come towards such, at least let them experience some of these very deep moments which many aspects of our heritage can provide. Overwhelmed by the potency of classical Indian art forms, and confronting their own feelings of vacuity, 4 young students in 1978 gave birth to a movement, Spic Macay. Today it is a dynamic and vital part of more than 400 schools and colleges all over India. It's only unintentionally that these things get this way, and nobody intends it. It encourages the young to participate actively and voluntarily in organizing a series of events that range from lecture demonstrations to concerts by eminent artists and performers, who in turn give of their time voluntarily. Spic Macay has evoked the unstinting support and encouragement of India's leading classical performers. It provides an opportunity for rare and unique interactions. The movement fosters a sense of community, of the willingness to be responsible, to serve. It seeks to promote culture not as a passive taking in, but a living, vibrant experience. जरा खींच के चलो, जरा खींच के। हाँ, ये ठीक है। इसको दिमाग हल करता है, समझता है, दिल फैसला करता है। ये स्पीक मैके बहुत उम्दा चीज है, बड़ी उम्दा चीज है। और उनके संबंध जो हैं, जिसके कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे हम बहुत करीब हो गए। पैसा इतना नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम ऐसा करते हैं कि तमाम बच्चों को सुनवा रहे हैं। किसी का भी प्रोग्राम हो, उसको सुनो तो कलाकार जो होगा उसका मूड बनेगा, उसका दिल खुश होगा कि बच्चे बड़े अच्छे हैं। और अगर उसमें होर्डिंग करना शुरू करो तो कहेगा कि हम कहां पहुंच गए। But those whose art can evoke the sublime, ineffably transforming emotions in their audiences, give so generously of themselves to Spic Macay, is the ultimate validation of their commitment.
people find themselves doing unusual things as they participate in a process that sensitizes them to the broader aspects of culture. The end is not just a distant goal. Its essence lies all along the way, linked closely with the means. The miracle of Spic Macay is that it functions through an elaborate national network of volunteers, young people, while in school and college, who pledge their time. A small, relatively stable core group based in Delhi provides direction and continuity. शुरू ही से स्पिक मैके के साथ हूँ, उसका एक मेंबर हूँ। तो छोटी छोटी जगहों में जाकर खासतौर से स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को, विद्यार्थियों को जो है हमने अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब और अपना तमद्दुन सिखाया और बताया और समझाने की कोशिश की है और आज तक कर रहे हैं। हमारी तहजीब और हमारा धार्मिक जो एक रिश्ता और एक संबंध है वो असल में शास्त्रीय गायन से है, वो शास्त्रीय उसूलों और प्रिंसिपल्स से है। भगवान राम कहते हैं कि मैं कहीं नहीं मिलता, न ऋषियों से मिलता, न मुनियों में मिलता, न जो भजन करते हैं उनमें मिलता, बल्कि मैं मिलता वहां हूं। मैं आपको रामायण सुना रहा हूं, मिलता मैं वहां हूं जहां गायन होता हूं। तो जब ये हमारी सभ्यता है तो शास्त्रीय संगीत एक ब्रिज है उस मालिक तक पहुंचने के लिए। आज अगर हम इन शांत रूप से उस मालिक को पहचानें, उसको समझें, उसकी पूजन करें, उसको याद करें, दिल में श्रद्धा रखें, तो आज जितने झगड़े हैं, जितने टंटे हैं, जितने फसाद हैं, जितने भी हमारे आपकी यानी कि जो है वो यानी ये दूरियां हैं, जो एक बड़ा अफसोसनाक और बहुत ही आजकल एक सबसे ज्यादा यानी कि जो है इस बात के कहने की जरूरत है कि ये जितनी भी यानी कि जो है वो शासन के लिए, कुर्सियों के लिए, ताकत के लिए, हुकूमत के लिए जितने भी झगड़े और फसाद हो रहे हैं, तो अगर ये संगीत को समझें, अगर ये शास्त्रों को समझें, अगर ये धर्म को समझें, तो आज ये तमाम झगड़े और तमाम फसाद पीस में बदल जाएंगे और इन नफरतों को बदल दिया जाएगा। और शुरू में वो कॉलेज में, हाई स्कूल में करते थे। एक 3-4 वर्ष के पीछे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में हुआ मेरा प्रोग्राम। उस वक्त वो लड़के को जबरदस्ती बिठा दिए थे उधर। एक लड़के कान में हाथ डाल दिया, हम गाने शुरू किए। वो टीचर वगैरह ही करने से फिर ऐसा बैठता था, फिर ऐसा करता था। डर के मारे में आजकल वो बैठते हैं, हम बोलते हैं कभी कभी किसी को जाना हो तो जाइए, नहीं जाते। इसलिए मुझे आज अच्छा लगता है, बहुत बाहर प्रोग्राम होते भी स्पिक मैके में हम आते हैं, मुझे अच्छा लगता है।
major problem is one of getting the young person to have a little patience and a little faith. These two things. And you know, Star TV, MTV, all these things are, all the outside influences which are coming, they have to come. I am never saying that they should stop. But what they are doing is, they are reducing the concentration or the span of patience of an individual day by day. You know what I'm saying? That is the thing which I'm very worried about. Truth can be, any human being has the ability to recognize truth. But it must be given, there must be a chance given to truth. I must be ready to say, look, I'm ready to check it out. For the checking out, it can't be the same checking out as you have with that checking out of Michael Jackson. It can't be. The format has to be a little different. That format requires two things, some patience and some faith. One such format is the Gurukul scheme. The Gurukul scholar embarks on a month-long journey of discovery and self-exploration. Here, Gorika and Shilpa have chosen to spend their time at the Tibetan nunnery in Maklodganj in Dharamsala. Gurukul, perhaps, for me it means that because in this, nowadays you don't tend to be, really near someone who is supposed to be doing something nice, wonderful about, and is convinced of that what he or she is doing. Like, I'm not expected to learn about Buddhism in 1 month, which is impossible anyway. People take years and years to learn. I think it makes you reflect on the way we live, I mean, they're unquestioning faith in certain way of life in some people, say for example in holiness, and the fact that they can actually take in strangers without any qualms. I think it makes us reflect on the way we live and our attitudes and our activities as well, because they live in austerity, and that austerity is not necessarily imposed from the outside. The girls interact intimately with the nuns and participate in the many aspects of community life in the nunnery. The catalysts for a holistic development can come from varied quarters, and the life of a nun indeed can provide valuable insights to a spiritual way of life, where the emphasis lies in cultivating altruism, concentrating not on what you can take, but what you can give. This is how the young people who would have had no chance to get attracted to our classical music have already become so much interested in it. And I think that's very important, because music is not just for entertainment, but to appreciate, not only just to learn, but to even appreciate it. It has a civilizing effect.